Hello everyone, welcome to Sorosa classes. This is the question from the complex analysis. Two Mobius transformation are given. So what is the Mobius transformation given? The Mobius transformation are given like fz equals to z by 1 minus of z and gz is 1 plus of z by 1 minus of z. So also there is a given a disk D such that mod of z less than 1. तो एफ डी और जी डी का कौन सा रीजन हम लोग निकालेंगे उसके ऊपर बेसिस करके हम लोग बोलेंगे कौन सा रीजन किसका सबसेट होगा. सो हम लोग को एफ डी निकालना है और जी डी निकालना है. सो एफ डी अगर निकालना पड़ेगा सो लेट डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ जेड. ओके, सो विच इज लाइक जेड बाई 1 माइनस ऑफ जेड. अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जेड इक्वल्स टू जेड. This gives z equals to w by w plus of. So under disk D mod of z less than 1. So अगर mod of z less than 1 होगा और u को हम लोग पकड़ लेते हैं, u is a complex number u plus of iv. तो mod of z less than 1 होगा मतलब mod of w by w plus 1 को भी less than 1 होना पड़ेगा. That means mod of u plus of iv should be less than mod of u plus of 1 plus of iv. U plus of 1 should be iv. So this implies रूट ओवर को हम लोग अगर स्क्वायर उठा देंगे सो u square plus v square should be less than. So this implies u square plus v square is less than u plus of 1 square plus of v square. So v square will cancel out. This gives u square less than u square plus 2u plus 1. So this gives 2u plus 1 greater than 0. So this implies u greater than minus 1. So where w equals to fz, where w equals to u plus of iv. So after taking mod of z less than 1, so we see that fd is a complex number z such that real z is greater than minus 1 by 2. Similarly for the gz, we let w equals to gz. What is gz? Gz is 1 plus of z by 1 minus of z. So after cross multiplication, this is 1 I say. W minus wz equals to 1 plus of z. So this imply w minus 1 equals to z into w plus of 1. So from this we get z equals to w minus 1 by w plus 1. So under mod of z less than 1, this implies mod of w minus 1 is less than mod of w plus 1. This implies mod of u minus 1 plus iv less than mod of u plus of 1 plus of iv. So this gives u minus 1 square plus of v square less than u plus of 1 square plus of v square. This gives u square minus 2u plus 1 v square cancel हो गया less than u square plus 2u plus 1. यहाँ से 1 plus u square 1 plus और u square भी cancel हो गया तो हम लोग को क्या मिला? Only 4u greater than 0, which implies u greater than 0. So under the disk mod of z less than 1, we see that w not, gd is a set of those complex numbers where real z greater than 0. Okay, this is 2. So हम लोग को देखना पड़ेगा fd और gd में से कौन किसका सबसेट है. सो fd ओके हम लोग सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं. सो सपोज दिस इज ग्राफ, दिस इज 0, दिस इज माइनस 1 by 2. सो ये जो रीजियन है, ये रीजियन दिस इज fd एंड ये जो रीजियन है this is gd. So from graphically it is clear that gd
is a subset of FD. Okay, so GD is a subset of FD. So S2 is true and S1 is false. S1 is false because FD कभी भी GD का सबसेट नहीं हो सकता. So ये ऑप्शन अच्छा, ये ऑप्शन करेक्ट करने में भी आप लोग को अच्छे से नोटिस करना पड़ेगा. देखिए ऑप्शन बी ट्रू है because S2 is true, yes, and option C is also true because here they mention that S2 is true and S1 is false. So B and C both are the correct option. So B and C होगा true होगा. Okay, thank you.